Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Welcome to class 7th. Today is our English class. So students, open your books and come on the page number 35. In the previous lecture we are discussing the lesson saving the mangroves and also its words, meaning, word, sentence and question answers of this unit. Now we should discuss the topic learn grammar, the passive. In an active sentence, the subject is the person or thing that performs the action. For example, Pakistan was a new world record by planting 541,176 mangrove plants in a single day. When we turn this sentence into a passive sentence, the object of the verb becomes the subject. अब इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. A new world record was set by Pakistan by planting 541,176 mangrove saplings in a single day. We use the passive when we say what happens to people and things, what is done to them. The mangrove trees were destroyed. The fertile land was swept away by the sea. We use the passive when we do not know who performed the action, when this information is not important. A number of mangrove trees have been planted. The liquid was heated at 50 degrees centigrade. If we want to mention who performed the action, we use by the end of the sentence. Example, the order was issued by the king. A new world record was set by Pakistan. The passive is made with the form to be found and the participle of the verb. This is a table विच शोज़ द सेंटेंस. जैसे आप प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे, पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करेंगे, पास्ट में पास्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट में. ये आपकी बुक पे दिया गया, इसको आपने इसी तरह से याद भी करना है कि ये टेबल में क्या बताया गया है, कौन से टेंस में हम किस तरह से चेंजेस करेंगे. अब यहाँ पे पेज नंबर 37 पे एक्सरसाइज एक दी गई है जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिनको आपने सॉल्व करना है. इनका सोल्यूशन मैं आपको साथ साथ बताऊँगी. जैसे कि दिया गया है, नंबर 1 है समवन हैज़ किल्ड मिस्टर फिलिप. अब मिस्टर फिलिप जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. मिस्टर फिलिप हैज़ बीन किल्ड और जो समवन है वो ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट वन है समवन फाउंड हिज बॉडी इन द बेडरूम. अब लिखेंगे द बॉडी वॉज फाउंड इन द बेडरूम. द बॉडी वॉज फाउंड इन द बेडरूम. नंबर 3, द किलर कमिटेड द मर्डर एट मिडनाइट. इसको आप लिखेंगे द मर्डर वॉज कमिटेड एट मिडनाइट. द मर्डर वॉज कमिटेड एट मिडनाइट. नो वन हैज़ सीन द न्यू सर्वेंट सिंस लास्ट नाइट. द न्यू सर्वेंट हैज़ नॉट बीन सीन सिंस लास्ट नाइट. द न्यू सर्वेंट हैज़ नॉट बीन सीन since last night. Next one has someone has informed Mr. Philip's son in Dubai about his father's death. Mr. Philip's son in Dubai has been informed about his father's death. The police have registered a case of murder. A case of murder has been registered by the police. A case of murder has been registered by the police. Next one, everyone will sadly miss Mr. Philip. Mr. Philip will be sadly missed by everyone. Mr. Philip will be sadly missed by everyone. Now dear students, you can learn the table which were given on the book on page number 36 and you write down the passive voice of these 7 sentences on your notebook. Read them and also learn them. Hope you understand the lesson. If you have any confusion, you can contact on the school official number. I say Allah Hafiz to all of you.